Good evening, students. So today we are starting with the Newton's laws of motion. और सबसे पहले अब हम इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें हम फर्स्ट लॉ को और मोमेंटम पढ़ेंगे. प्लीज गिव द हेडिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, बहुत कुछ आपको लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग विच वी गिव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. According to this law, you have to write, you have to make notes. Every body continues in its state of rest or of uniform motion. Uniform motion in a straight line. Unless it is compelled by some external force. To change the state. So you'll have to write. अब देखिए, आपको पहले नोट्स बनाने हैं. If a body is at rest, पहला पॉइंट. If a body is at rest, रेस्ट आप अच्छे से समझते हैं. If a body is at rest, then so as to set it in motion, a force has to be applied on it. अच्छे से आप राइटिंग नोट्स करिए. सेकंड पॉइंट, इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ constant speed along a straight line, then in order to decrease or increase its speed, आप इसे लिख लीजिए.
Continue continuously. You'll have to write some point about the first law of motion. Make notes. The law is very clear. If a body is at rest, it will remain in the state of rest unless some external force is applied on it. If a body is moving under the state of motion, a force is required, needed to change its state of motion. How you can change the state of motion? The speed of body may be increased. If you want to increase the speed of body, then you need to apply the force in the direction of speed. If you want to decrease the velocity of body, then you need to apply a force in a direction opposite to the velocity. So, in short, we can say that force is the cause which can change the state of rest or state of motion of a body. अच्छे से नोट्स बनाइए, काफी कुछ थियोरेटिकली चलेगा आज, और थर्सडे ऑनवर्ड्स जो आपका क्लास है वो आपके ऐप पे अवेलेबल है. आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन क्लिक करना पड़ेगा, तो जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा ऐप पे ही मिलेगा, तो यू विल गेट क्लास ऑन ऐप. तो डायरेक्टली आप क्लास में एंटर कर जाएंगे. थर्सडे की क्लास का टाइम 5 PM ही है जैसा पहले था. So when you are done, please do inform me. Okay, तो अगली स्लाइड पे जा रहे हैं. अच्छे से नोट्स बनाइए, पहले फर्स्ट लॉ के, फिर मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फिर थर्ड लॉ पढ़ेंगे, फिर लॉ के डेरिवेशंस पढ़ेंगे. तो सेकंड पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको. इफ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, then in order to decrease or increase its speed. So I am moving to the next slide. Comma, a force has to be applied in the direction of motion or opposite to the direction of motion. Third point, if a body is moving with constant speed, constant speed along a straight line, then in order to
change its direction of motion, a force has to be a force has to be applied normal to the direction of motion, normal to the direction of motion. तो ये तीन बातें हो गई आपकी। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और अगर आपको उसकी स्पीड को चेंज करना है तो आपको पास दो ऑप्शन हो गए, या तो आप डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स अप्लाई करें या फोर्स अप्लाई करें इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। बट if a body is moving along a straight line, if you need to change the direction of its speed, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन can be divided into two parts. Can be divided into two parts. The first part is is concerned with a basic property of matter called inertia. Called inertia. Inertia is that property of matter, that property of matter by virtue of which by virtue of which the body is unable to change its state by itself. तो इनर्शिया के कारण बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज खुद नहीं कर सकती। इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। So to change the law clearly says that to change the state of rest or state of uniform motion, an external force is needed. तो हम कहते हैं कि every body has a property of inertia by virtue of which the body cannot change its state of rest or state of uniform motion by itself. It requires some external force. आगे लिखेंगे, in the absence of
external force. If external force is absent, then body cannot change its state of rest or state of motion. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं. Suppose in any room there is a chair and chair is in the state of rest. It will remain in the state of rest unless some external force is applied on it. If chair is set into motion by applying force on it, this inherent property of bodies that they do not change their state unless acted upon by an external force is called the inertia. तो inertia को हम दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. तो अगली स्लाइड में हम उसको लिखेंगे. लिखते चलिए. यहाँ में आपको पहले कंप्लीट थ्योरेटिकल बेस बनाना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें. एंड आपको अच्छा लगेगा. ओके, सो यू आर डन. ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं. तो आप इसको जरूर लिखिए. Inherent property of the bodies that they do not change their state unless acted upon by an external force is called inertia. Is called inertia. The second part of the first law of motion gives a definition for force. Force is a push or pull when applied on a body to change its state. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने चाहिए. पूरा थ्योरेटिकली चलेगा. पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी
A force is defined completely, ये बात ध्यान रखिएगा, completely, if its magnitude, direction, and point of application are given. देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मीनिंग है कि फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो फोर्स की डेफिनेशन तभी कंप्लीट होती है जब हमें मालूम है कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। सो राइट इट डाउन। ओके, सो यू आर डन विद इट। ओके, अब फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखिए। तो पहली चीज तो है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फोर्स कंप्लीटली डिफाइंड तभी होता है जब हमें उसकी वैल्यू मालूम हो, ये पता हो इन विच डायरेक्शन इट इज एक्टिंग एंड एट व्हाट पॉइंट इट इज एक्टिंग। ये तीनों बातें हमें मालूम होनी चाहिए। देखिए सेकंड पॉइंट, द स्ट्रेट लाइन along which a force is applied force is applied or better to say directed। अब हम इस बारे में बात करते हैं। is directed is called the line of action of force। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, a force is needed to accelerate a particle। This implies अगर आपको किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। दिस implied that if a body moves with uniform velocity, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और इज एट रेस्ट there is then there is no
रिजल्टेंट और अनबैलेंस्ड लैंग्वेज है फिर इसकी, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो कहने का मतलब है, अगर आपको एक पार्टिकल को एक्सलरेट करना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक बॉडी रेस्ट में है या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसका क्लियर मीनिंग है दैट देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। चौथा पॉइंट, when many forces when many forces act on a body simultaneously। अब कई बार क्या होता है, देखिए तीसरा पॉइंट बहुत क्लियर है। अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसका मतलब है उस पर नेट फोर्स एक्ट करने वाला नेट फोर्स जीरो है, उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अगर जब बॉडी पर फोर्स एक्ट करता है तब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करती है, या तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और आप फोर्स लगा रहे हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इन विच यू आर अप्लाइंग द फोर्स। तो जब ये तीसरा पॉइंट क्लियरली सिर्फ एक ही बात बताता है, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिर्फ ये चीज बताता है। व्हेन मैनी फोर्स एक्ट ऑन, देखिए अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन मैनी फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हो एट वन पॉइंट, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं। एट वन पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड concurrent forces। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, they are called concurrent forces। ये चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए। In the system of concurrent, ये एक थ्योरेटिकल लेक्चर है। फोर्सेस, द फोर्सेस में भी बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं जाए, कंप्लीट नॉलेज हो। द फोर्सेस में भी, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक्टिंग along the same straight line। पॉइंट नंबर बी, कोप्लेनर। ये लैंग्वेज आती है, कोप्लेनर
एक्टिंग इन द सेम प्लेन, एक्टिंग इन द सेम प्लेन। स्टूडेंट बोलते हैं सर क्वेश्चंस नहीं बनते क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता है कि कॉन्ग्रुएंट क्या है, कोलिनियर क्या है, कोप्लेनर क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इट्स ए जनरल लेक्चर, ये बहुत जरूरी लेक्चर है। और स्कूल में आपको कभी इतना जनरल लेक्चर नहीं मिलेगा, वो फटाफट आएंगे और बहुत जल्दी सब चीजें बता के चले जाएंगे। बट हियर वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी स्टेप एंड कंसेप्ट ऑफ द फोर्स एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मास। आप चिंता मत करिए, और एक एक चीज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, एक एक थ्योरेटिकल पॉइंट को क्लियर करेंगे। और दूसरी चीज, मैं आपको कई बार मैंने एश्योर किया है, ये क्लासेस आपकी हमेशा चलेंगी, चाहे एक बच्चा हो चाहे एक बच्चा ना भी हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, रीजन इज बीइंग दैट मेरे तकरीबन 28,000 फॉलोअर हैं अन अकेडमी में पढ़ाने के कारण पूरे इंडिया में। ये लेक्चर्स सिर्फ आप ही के लिए नहीं, उनके लिए भी मैं भेजता रहता हूँ। और एक लेक्चर लाइब्रेरी मैंने तैयार करी है जो स्टूडेंट को हेल्प करती है। हाँ, डेफिनेटली उनको लाइव लेक्चर्स नहीं मिलते हैं, रिकॉर्डिंग ही मिलती है, और जब वो फ्री होते हैं तब उसको देख लेते हैं। तो ये क्लासेस हमेशा कंटिन्यू रहेंगी, कभी भी बंद नहीं होंगी। अब मास के बारे में समझते हैं। तो मास क्या है? तो देखिए, एक सिंपल वर्ड में हम बता देते हैं मास क्या है। इनर्शिया। इनर्शिया, देखिए, अब लिखते हैं हम इसमें द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which is a measure of inertia of a body. Inertia of a body is called inertial mass. अब देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, inertial mass। अब देखिए अगला पॉइंट, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमें मालूम है ये सब चीजें, फिर भी हम लिखेंगे। इट इज मेजर्ड इन केजी। केजी स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। मास ऑफ बॉडी, हाँ देखिए, अब ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है जो हम लिखेंगे, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब ये वर्ड यूज किया हमने, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसका मतलब क्या है? मैकेनिक्स, ये वो ब्रांच जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती है। द मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन
does not depend upon velocity of body. Velocity of body. तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इनर्शिया को कैसे मेजर करते हैं? मास से. अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो हम कहेंगे इट हैज मोर इनर्शिया. किसी बॉडी का मास कम है तो हम कहेंगे इट हैज लेस इनर्शिया. तो इनर्शिया हैव बीन कोरिलेटेड विद द मास. इसको नोट कर लीजिए. आइंस्टाइन की थ्योरी में मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. वो हम अब बाद में पढ़ेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए. अब देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोमेंटम. इट इज डिनोटेड बाय लेटर पी. इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे. इट इज डिफाइंड as the total quantity of motion contained in a body, and is measured as the product of the mass of the body and its velocity. Second point, because the momentum is the product of a scalar. यहाँ स्केलर क्या है? मास. एंड वेक्टर. वेक्टर क्या है? वेलोसिटी. तो थोड़ा हमें इसे हाईलाइट करना पड़ेगा. स्केलर क्या हो गया हमारा? मास हो गया. और वेक्टर क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया. क्योंकि जब हम मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं तो हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालते हैं. Hence it is a vector quantity. It is a vector quantity. It is a vector quantity. It is represented by P. It is directed along the velocity.
along the velocity. तो ये पॉइंट नंबर बी हो गया. अब पॉइंट नंबर सी. The momentum of a body of mass m moving with velocity v is given by. So note it down this. तो momentum is also called, यहाँ पे जो momentum का वर्ड है उसमें एक और चीज आप लिख सकते हैं, linear momentum, because body is moving along a straight line. That is why it is called, because we are talking about linear velocity. So that is why it is also called linear momentum. Okay, whenever you are done, please tell me. अब देखिए एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे जो बड़ा सिंपल है. देखिए D, if a ball of mass say m1, okay, and a car of mass say m2, definitely m2 is greater than m1, are moving with same velocity. If P1 and P2 are the momentum of ball and car respectively, then P1 is m1v and P2 is m2v. So P1 upon P2 is m1v. अब आपको क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं. v कैंसिल हो जाएगा, m1 अपॉन m2. पर आप जानते हैं m2 इज ग्रेटर देन m1. देखिए आप सीखिए. तो m2 बाय m1, m1 को लेफ्ट में लिया है, ग्रेटर देन 1. तो इसको पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो m1 बाय m2 इज लेस देन 1. तो p1 बाय p2 आया यहाँ पर m1 बाय m2, that is less than 1. So we can say that p1 by p2, अप्रोच बता रहा हूँ आपको, लेस देन 1. p1 is less than p2. बॉल का मोमेंटम कार के मोमेंटम से कम होगा. ऐसे लॉजिकली चीजों को डिस्कस किया जाता है. तो मोमेंटम को जब भी कैलकुलेट करना है तो हमेशा
एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मास और वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए और मास भी मालूम होना चाहिए। दो बॉडीज का मोमेंटम सेम भी हो सकता है, चाहे उनके मास डिफरेंट हो तो भी सेम हो सकता है। क्यों हो सकता है सेम? क्यों सेम हो सकता है? क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप सिर्फ वेलोसिटी से मोमेंटम को डिसाइड नहीं कर सकते, सिर्फ मास से डिसाइड नहीं कर सकते। ये हैवी है तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। नो, मोमेंटम इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको बता रहा हूँ, तो जरा आप इसको आप सब लोग समझिएगा। देखिए ऐसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम होगी केजी, मास की यूनिट मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम केजी एम मीटर एल सेकेंड टी, so it is mlt minus 1, mlt minus 1। आप लिख सकते हैं mlt minus 1। केजी मीटर पर सेकेंड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी एम एस माइनस 1। इसका मतलब भी यही होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ डील्स विद मोमेंटम, इसलिए हमें मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है। तो मोमेंटम को क्या इवेल्युएट करने के लिए आपको बॉडी के मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखिए, लेट E be the kinetic energy of a body, kinetic energy of a body, and P be its momentum, P be its momentum। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम को आप लिख सकते हैं m इंटू वी। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये चीजें तो हम लिख ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टी काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में हम दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा एम वी इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब देखिए 2 इधर चला गया, 2 me इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? p का स्क्वायर। तो ये देखिए ये रिलेशनशिप आ गई हमारी, p स्क्वायर इक्वल टू 2me, p स्क्वायर इक्वल टू 2me, p स्क्वायर इक्वल टू 2me। इसको आप लिख लीजिए। तो बिल्कुल बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं।
अब जैसे देखिए एक आपको अप्रोच ओरिएंटेड चीज बताते हैं, इसमें आपको इसको समझना पड़ेगा। लाइट बॉडी मतलब जिसका मास कम है, एंड अ हैवी बॉडी मतलब जिसका मास ज्यादा है, हैव सेम मोमेंटम। which body will have which body will have more kinetic energy? अब देखिए, हमने सपोज करना है मास ऑफ लाइट बॉडी m1, मास ऑफ हैवी बॉडी m2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी E1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी E2। तो देखिए, पर मोमेंटम दोनों का सेम है, 2m1 E फॉर लाइट बॉडी, फॉर हैवी बॉडी 2m2 E। तो दो इक्वेशन हो गए, दोनों इक्वेशन से पी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट कर दो, तो ये मिलेगा आपको 2m1 E1 इक्वल टू 2m2 E2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E1 अपॉन E2 क्या आएगा, m2 बाय m1। m2 बाय m1 का मतलब है, देखो, हैवी बॉडी का मास डिवाइडेड बाय लाइट बॉडी का मास। जब बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो हम कहेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2। सो इंटरेस्टिंग टू नो कि लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी। सो यूज ऑफ इक्वेशन, लॉजिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हाउ टू यूज द फॉर्मूला, हाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एंड मैं आप लोगों से बहुत बार बोलता हूँ कि आप किताबों को पढ़ा करिए। मुझे लगता है कि आप लोग कम पढ़ते हैं किताबों को। मैं कम पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, किताबों को ज्यादा पढ़िए, क्लास नोट्स को बहुत बार पढ़िए, रिवाइज करिए, तो कंसेप्ट अच्छा होगा। तो ये लास्ट पेज आपको एक बार और देखना है तो आप देख लीजिए। कुछ नहीं करा था हमने, एनर्जी के इक्वेशन में हाफ एम वी स्क्वायर में दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड एम ई, और राइट हैंड साइड में एम वी स्क्वायर को जब एम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब आप इसे नोट कर लीजिए और मुझे बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेफ्ट बॉडी, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम था, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, टेक योर टाइम। तो आज देखिए हमने एक जनरल बातें करी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिस्कस करा बहुत आराम से, एक एक चीज को। आप इस नोट्स को पढ़िए बिफोर एंटरिंग टू द नेक्स्ट क्लास, आप इसे पढ़िए और फिर अपनी एक बार बुक जरूर पढ़िए। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर हम उसे डिराइव भी करेंगे और केजी वेट और काफी दूसरी चीजों के बारे में करेंगे, बात करेंगे। फिर मिलते हैं, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए।